Good morning, student. I am your Stephen sir from Ikra English Medium. Today I am going to teach you subject English Standard 4th Unit 4, and today we are going to study a lesson called Alice in Wonderland. Okay, student. So let's get started. One day Alice was lying under a tree, listening to her sisters reading a story. So she was with her sister, listening a story, sitting where she was sitting under a tree. Okay? Suddenly she saw a white rabbit scamper by. He had pink eye and was wearing a blue coat. He took out a big watch from his waistcoat pocket, and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." So while she was sitting, she saw a white rabbit scamper, and his eyes was pink in color. What she saw a white rabbit. What she saw, my dear student, what she saw, a white rabbit. Okay? Which was in her head, that had pink eye. It had a pink eye, okay? And wearing a blue coat. It was wearing a blue coat. He took out a big watch from his waistcoat pocket. What he took out? A waistcoat pocket. And as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." Who said I will be too late? The white rabbit said, "I will be too late." She thought there was something very different about this rabbit. It could talk, it wore a red waistcoat, and it carried a watch. So you can see in this picture that this rabbit is having a pink eye, wearing a waistcoat, and having a watch. So she thought that this rabbit is something different. It could talk. This rabbit could talk also. A strange thing, right? A rabbit never talks, but she saw that this rabbit can talk. So it was very strange. It could talk, it wore a waistcoat, and it carried a watch. Alice wondered, a talking rabbit, a rabbit who wear a waistcoat. Alice was burning with curiosity, and she followed the white rabbit. Burning with curiosity means जानने की इच्छा. क्यूरियोसिटी मीन्स जानने की इच्छा कि भाई ये कौन है, क्या है, कहाँ जा रहा है. सो वॉट शी डज, शी फॉलोज हर. वो उसका पीछा करती है. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. रैबिट भाग रहा है और एलिस उसका पीछा कर रही है. द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल. Alice jumped into the rabbit hole too. The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. तो रैबिट भागा भागा भागा, वो अपने बिल में कूद गया, और उसके पीछे पीछे एलिस भी भागी भागी और अपने होल में गिर गई. Alice said aloud, "Where am I? How many miles down have I fallen? I must be getting somewhere near
the center of the earth. She wondered, will I slip through the earth to the other side? एलिस जब नीचे गिर रही थी तो वो बोली कह रहे मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ पहुँच गई, मैं कितने मीलों दूर पहुँच गई, क्या मैं अर्थ के सेंटर तक पहुँच गई और कहाँ निकलूँगी? थंब एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ अ ड्राई लीव्स. वो गिरी एक पत्तों के ढेर में जाके गिरी. She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. It disappeared, saying, "Oh, my ears and whiskers, how late it's getting." So, एलिस ने देखा किसको? रैबिट को, कि रैबिट धीरे धीरे गायब होते जा रहा है. Alice stood up and saw a small door about 15 inches high. It was too small for her to go through. तो एलिस ने देखा कि 15 इंच का बहुत छोटा सा डोर है और वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रही है, बट वो बहुत छोटा है उसके लिए. She saw a glass table with a golden key on it. तो उसने एक ग्लास टेबल देखा जिसमें गोल्डन चाबी थी. She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. उसने देखा कि भाई एक चाबी है, उससे वो लॉक करती है और वो लॉक भी हो जाता है. Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. तो ओपन करती है और देखती है अरे कितना अच्छा गार्डन नज़र आता है. How she longed to be among those beds and bright flowers and those cool fun fountains. उसने ऐसा गार्डन कभी नहीं देखा है. फ्लावर बेड्स है, दूर दूर तक फ्लावर है, एक फाउंटेन है जो बह रहा है. यू कैन सी द फाउंटेन. कैन यू सी द फाउंटेन माई डियर स्टूडेंट? यस. और ये है पूरा गार्डन. बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हैंड्स थ्रू द डोरवे. वो अपना हैंड उस डोरवे तक नहीं डाल सकते क्योंकि वो डोर बहुत छोटा है. ओ हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम लाउडली. और वो बोलती है कि काश मैं छोटी हो पाती ताकि मैं अंदर जा सकती. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ये पिक्चर में देख सकते हो कि वो ये कोई फ़ोटो नहीं है, ये एलिस है और ये जो है वो दरवाज़ा है. इससे वो ज़्यादा बाहर निकल नहीं सकती है. सो दिस वॉज द शॉर्ट स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच.